Hello guys, welcome back to Curious Study for another discussion on Indian football. एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे अगेन अरुणा सर। तो बात करेंगे आज हम पिछले एक साल की इंडियन फुटबॉल की और उसका यहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स की जो यहाँ पे अच्छी हुई, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी कि जो वो यहाँ पे खराब हुई और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी कि जो थोड़ी सी अगली चीजें हुई। तो इन सारे जो पहलू है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सीजन भी खत्म ही बोल सकते हो आप। ये जो 2 मैचेस वो बचे वही है, बाकी तो आपका सीजन मतलब क्लब पर्सपेक्टिव से और उन सब से अगर आप देखें तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड क्या क्या चीजें यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के अराउंड अभी चल रही है एट द मोमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हेलो एंड व्हाट्स योर ओवरऑल यू कैन से की पर्सपेक्टिव अबाउट दिस लास्ट ये जो पिछला एक सीजन रहा है हमारा, मतलब हम अगर हम काउंट करें आई थिंक इंटरकॉन्टिनेंटल कब से स्टार्ट करते क्योंकि वो आई थिंक मई से हमारा स्टार्ट हुआ था एक लंबा कैंप लगने के बाद एंड देन साफ एंड देन पूरा जो सीजन। हाउ डू यू रेट दिस 1 year ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड किस तरह से आपका क्या पॉइंट? Well, hello Hiren, hello everyone who's watching. It's a very mixed, feeling that I have because Intercontinental Cup went very well. We won it. I happened to be in Bangalore. I was able to watch the SAF Cup semi-final and final. The atmosphere was great. There was a lot of hope. But I again say that again and again, and I remember I was standing with key people who are working in Indian football at the time, and they were also aware is good it was to win those, as good as it was to win those games. There's a long way to go for Indian football, and the bubble burst. Since then, the reality has sort of kicked in, that the question of India home and away, that is one question. What is our performance levels? That we have to accept that there are issues, problems, challenges in Indian football, and the question of accountability. My biggest concern in today's Indian football is at all levels is accountability. If I see the AFF talking about things, if I see Igor Stimac talking about things, I'm part of a managers and coaches WhatsApp group where it's where people are justifying things where I sometimes feel like, guys, what are we talking about? The basics are wrong. My biggest concern is we can talk about everything, with the future of Indian football, this will happen, that will happen. But as long as the basics are not good, as long as the foundations are not strong in Indian football, how can we reach the higher levels? And that's the challenge, I think, which is for Indian football to realize, and we need to be honest to ourselves to recognize that. सर एक चीज मतलब लेट्स डाइसेक्ट और यू कैन से कि थोड़ा सा हम पीछे अगर देखें तो आई थिंक इसको थोड़ा सा हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो नेशनल टीम का अगर आप देखें तो हमने इंटरकॉन्टिनेंटल खेला, देन साफ खेला जो हमारे लिए 2 सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहे। एंड उसके बाद आपने जैसे बोला कि हमारा बबल बर्स्ट हुआ, एक तो सितंबर में जिस तरह से सारा मिसमैनेजमेंट हुआ क्लब एएफएफ एंड जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में सारी चीजें यहाँ पे रिगार्डिंग दैट एशियन कप एशियन गेम्स पार्टिसिपेशन हुआ। एंड वहां से आप बोल सकते कि कंप्लीटली हमारा जो डाउन हिल है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, किंग्स कप, मर्देका कप, बीच में आप बोल सकते कि एक वो जो कुवैत वाला अवे मैच वाला जो परफॉर्मेंस था या फिर वो जो रिजल्ट था वो यहाँ पे नेशनल टीम के लिए बेटर आया। देन आप फिर बोलेंगे कि एशियन कप हमारे लिए काफी ज्यादा मतलब वर्स्ट रहा कंपेयर टू 2019। देन दिस मार्च अफगानिस्तान मैचेस। सो नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से आप पिछले एक साल को आपके लिए प्लस माइनस एंड आपका ओवरऑल क्या क्या लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी हो सकती थी कि जो बेटर कर सकते थे एंड आगे होनी चाहिए आपके हिसाब से? See, if people want to go back, we have discussed it. Rahul and I discussed it during the SAF. What I felt. A couple of discussions in Bangalore. Just watch it. It is from July last year. I said multiple times, September will be crucial. The AFF needs to sort out its calendar. They didn't. They did not sort out the rest of the year's calendar. The AFF's problem is then, you came towards the end of the year where I always said April, May, as long as we can't do, we can't think about holding a normal season in India in April, May. As long as we don't have, sort of indoor arenas as you have in the US or in Canada, we have some football stadiums here in Germany, Schalke, Düsseldorf have those. As long as we don't have closed
arenas where you can say, listen, 45, 50 degrees, I don't care. I have a, air-conditioned stadium where you can play. Those are factors. Monsoon is a factor. So if I like it or not in an Indian condition, it's the same thing what I say in Europe as well is with the cold weather, with the rainy weather. The weather is a huge factor in our football. In Kolkata, they used to say, you know what, the CFL is played in the monsoons. It was played in June, July, August, which was the high time of monsoon, right? But is that the real, you want to see that being played that way? That is, it's not football, right? So these realities have to wake up. The good thing with, if you want to turn it around, now you have someone like Satya in the AFF, who is the acting Secretary General, who understands these things, has experience. And Satya is trying to structure things. But there are realities of India which make it difficult. Again, running the AFF is not easy because you're not running a country federation, in my opinion. India is called a subcontinent. It is huge. What works, you're in Gujarat. What works in Gujarat will not work in Maharashtra. What works in Maharashtra will not work in Bengal. What works in Bengal will not work in Kerala. That not will work in Karnataka. The Northeast, or let's say Kashmir, Himachal, totally different climatic situation. So these are realities, and I hope that they're able to sort these things out, because otherwise it becomes very, very problematic, because these things come back and the fans have to ask themselves the question. Fans were fighting for the Asian Games, where I clearly said the Asian Games is not for me in this calendar, with all that is happening with AFC Champions League, with AFC Cup, with national team assignments. You want to start the ISL early because of the Asian Cup. The Asian Games, easy, you should have sent the under-20s. Why? With political intervention, were Sunil Chhetri, Gurpreet and Sandesh, all these guys activated. So for me, these might be small things, yes. But for me, that's something where, common sense, knowledge, I always say knowledge, understanding needs to come in. नहीं आपने ये तो मतलब एक चीज आई थिंक, ये जो हमारा पिछला एक साल रहा है उसमें आई थिंक कैलेंडर वाइज ये सबसे ज्यादा हेक्टिक भी रहा है। अगर आप उस टर्म्स में देखें, आपने देखा कितने सारे टूर्नामेंट थे, उसमें आपकी प्रायोरिटीज आई थिंक क्लियर कट होनी चाहिए थी। उस टाइम पे भी ये न्यूज आया था कि भाई जब सीजन स्टार्ट हुआ उससे पहले मार्च अप्रैल में एएफएफ, एफएसडीएल एंड कोच के बीच में मीटिंग हुई थी, उसमें एशियन गेम्स प्रायोरिटी नहीं था। देन फैंस ने प्रेशर बनाया, सारी चीजें हुई। बट आई थिंक ये सीख तो आई थिंक एएफएफ को एंड आईएसएल के ऑर्गेनाइजर्स एंड कोच को भी लेना चाहिए कि नेक्स्ट सीजन ये भी जो आपका स्टार्ट हो रहा है कि जहाँ पे आप 26-27 जुलाई से आप दुरान कप से सीजन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो कौन सी आपकी प्रायोरिटीज है? ऊपर से आप ये भी प्लान कर रहे हो कि आपका सुपर कप या फिर फेडरेशन कप जो भी होगा वो यहाँ पे लीग के साथ चलेगा। देन यू हैव 2 क्लब पार्टिसिपेटिंग इन एशियन कंपटीशन एंड ये सारी चीजें अब होने वाली है। तो उस सेंस में आई थिंक ये सीख होनी चाहिए कि अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए जो उस टाइम पे सितंबर में जिस तरह से आपने सारा मैसअप कर दिया था। एंड किसी को मतलब क्या बोलते कि प्लेयर यहाँ पे मैच खेलने से एक दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले आई थिंक पहुंच रहे थे। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली शुड बी लर्निंग। टिकट आई थिंक एक वीक में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा भाई, तो टिकट बहुत जल्द यहाँ पे मिलने वाला है। हेलो आर्यन भाई। दूसरा मैं यहाँ पे आईएसएल के सीजन के पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि पहली बार आईएसएल यहाँ पे आईपीएल के साथ हुआ, ये पहली बार हुआ आईएसएल के बार, और लग रहा है कि अब हर सीजन में ये करने का प्लानिंग है। तो इसको आप अच्छा मूव देखते हो या फिर इसको आप किस तरह से देखते हो? See, I think the general situation of the ISL is, if you see the marketing of the ISL, it has gone down dramatically. For the first time, there was no title sponsor. I did not see any other kind of sponsors coming on board. We have the problem of FSTL and AFF contract. What will happen? We have to ask the question, is the next season of the ISL maybe the last season of the ISL? That is a potential reality. So therefore, nothing much will happen next season. The one advantage is there is no Asian Cup, which means the January will be available to the ISL organizers as a time, but you have another team coming in, which means 2 more league matches also, with Mohammedan Sporting getting promoted. So we will see the ISL 100% spilling into the IPL.
Now, one thing which I think you and I and all the others will have to realize, if we like playoffs or not, the playoffs were actually the most successful thing of the ISL of the last season in regard to fan attendances. Right? If you look at all the games, most of them were sold out. Kolkata had for the Shield decider, for the semi-final, and for the final over 60,000 fans. This is and you didn't have it before in the season. So these are realities. Now, will the ISL spend more on marketing next season? I doubt it. And this is something where people always ask me, I don't know this. I said, in today's world, if you want to know when and where a match is happening, just Google. You'll have it in a few seconds. So therefore, for me, honestly, if people tell me, I don't know when this team is playing, I don't know when this team is playing, I don't know this. In today's world, every information is available in a millisecond, on your hand. So therefore, I'm hoping for better things, but I think next season will depend a little bit on if before the ISL starts, the AFF and FSDL sort out their contractual situation, or if it happens during the season, it will be similar to this one. It is happening, it is alive, but you're not putting an extra effort into the league. आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आप देखिए फुटबॉलिंग वाइज, मतलब जिस तरह से आप देखें कि आपने जैसे बोला कि प्लेऑफ था और लास्ट डे तक यहाँ पे रोमांच बना रहा, उस सेंस में आई थिंक ये वन ऑफ द एक्साइटिंग सीजन आप मानेंगे। बट आई थिंक पोटेंशियल है और उसको जो एफर्ट डाला जाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पे एट द मोमेंट अनसर्टेन है, तो उसके चलते वो भी नहीं हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आपको लगता है कि भाई हाँ इस सीजन हमने जो एक थोड़ा सा मार्केटिंग में स्पेंड किया है तो नेक्स्ट सीजन यहाँ पे और ज्यादा कर सकते थे, तो वो मेरे को भी लगता है कि वो थोड़ा सा फ्लैट ही रहेगा, कि उतना ज्यादा एफर्ट उस डायरेक्शन में मैं नहीं देख रहा कि यहाँ पे लगने वाला है। कुवैत के मूड के मूड के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। आईएसएल एंड नेशनल टीम की तो हमने बात की, एंड नेशनल टीम के लिए आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग के जो 2 टूर्नामेंट थे वही हमारे लिए सक्सेसफुल थे, बाकी तो हमारे लिए एक वो बीच वाला कुवैत वाला मैच ही अच्छा था, बाकी सारे मैचेस आप बोल सकते थे कहीं ना कहीं उतने परफॉर्मेंस हमारी ओर से नहीं आई। बट उससे नीचे जो है यहाँ पे आईएसएल एंड उससे नीचे, तो वहाँ पे तो आई लीग का हमें प्रॉपर ब्रॉडकास्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पे भी ऑब्वियसली आपके आईएसएल के पास स्पॉन्सर नहीं है, तो वहाँ पे तो कहाँ पे ही मिलने वाले हैं। तो उसके नीचे जो भी यहाँ पे ये अंडर 17 लीग हुआ अभी रिसेंटली, ये अभी अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है, अंडर 15 का हो रहा है, अंडर 13 हुआ, इस सब को आप सॉरी आई थिंक सर आई थिंक बहुत जल्द जुड़ेंगे, ऐड हो चुके हैं। और बाकी ये जो आपके आई लीग 2 हुए, आई लीग 3 हुआ, ये सारी इन सब को आप किस तरह से रिव्यू करते हो, इसमें क्या क्या चेंजेस नेक्स्ट सीजन से होने चाहिए? I think what the AFF under Satya has been trying to do is ensure that all the competitions are happening again. That's the first thing. That's a good thing, because I think for the first time since COVID, these tournaments are happening. I think we need to structure some of these tournaments differently. I see a lot of zonal matches where suddenly teams are scoring 20, 30 goals, even in small sided formats. So that has to be looked at. I think, we need to extend the youth tournaments, need to happen for 5-6 months if possible. In certain states it is possible. If you want to do it, Karnataka, let's say Bangalore can do it, Goa already has been doing it, Kerala potentially can do it, Bengal can do it, the northeastern state can do it. So the states where football is more available, you need to do that. And on the other side, to me is very, very important is that how do you schedule even the youth competitions, in also remembering when our school exams, those kind of things, weather conditions, because I know a lot of people are saying, in March you're playing 3 o'clock, 3:30 kickoffs and all. You will not have kids normally be playing, playing at 7-8 o'clock in the evening. I mean, even I-League clubs don't want to play at that time because it's too costly. It costs 30, 40, 50,000 for the floodlights to turn on in grounds. So as long as these costing issues are not sorted, as long as you don't have options to, how to offset the cost, you will see this 8 o'clock, 9 o'clock kickoff or this 3 o'clock kickoffs, which is not ideal. But if there is no other option, I'd rather say kickoff early in the morning where it's not as hot, rather than doing 3:30 kickoffs.
एंड रणबीर सोनी ने पूछा है रिगार्डिंग आरएफटीएल, उसके बारे में, मतलब अभी एट द मोमेंट अगर आप इस सीजन का एग्जांपल के तौर पे लें, तो आपका अंडर 13 पे हुआ, 15 हुआ, 17 हुआ एंड अंडर 21 हुआ। तो आपको लगता है कि इस तरह की आरएफटीएल टाइप एक और यहाँ पे अंडर 19 लेवल पे कोई एक लीग यहाँ पे हो सकती है? हाउ डू यू सी दिस आरएफटीएल? क्योंकि ये तीसरा सीजन था आरएफटीएल का, एंड वो भी अपने आप को एक्सपांड करते जा रहे हैं। पहले आई थिंक एक आध महीने के लिए हुआ था, उसके बाद अभी लास्ट सीजन 2 महीने के लिए हुआ, इस बार तो और भी ज्यादा लंबा चला है। See, RFTL as a league is important. It gives a lot of exposure for those fringe players. But if I see that in a final, Amarjeet is captain of Punjab FC, PV Vishnu is playing on the other side. We saw last season, Kian Nasiri and Raj Basfor and Dipindu Biswas and Abhishek Suryavanshi playing. The question is, how do you regulate that? How do you regulate that kids who are actually part of the first team, the fringe players is fine, but if you have too many minutes, then you shouldn't be playing, or should be playing a certain number of I don't know. That needs to be figured out because, you know, that, you need to find solutions there. But it is important to have RFDL. It is good, but it needs to expand. Like with everything else, ideally it should be played throughout the season, and let's see how they structure that because and then the zonals and stuff. I think let's see what happens. दूसरा ये है सर, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट है रिगार्डिंग दिस कि आप इसको आई लीग 3 को और इसको किस तरह से इंटरलीग करेंगे ये लोग? क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, इस सीजन क्या हुआ कि आपने मोस्ट ऑफ द स्टेट में यहाँ पे 1-2 एंड मैक्सिमम 3 महीने के लिए यहाँ पे स्टेट लीग होता है। तो स्टार्टिंग में वो स्टेट लीग हुआ, फिर उसका जो विनर था उसको उन्होंने आई लीग खिलवाया, आई लीग 3 खिलवाया यहाँ पे आई थिंक नवंबर दिसंबर में, एंड देन आपका यहाँ पे फिर आई लीग 2 स्टार्ट हुआ। तो एक ही सीजन में आपका यहाँ पे एक जो क्लब है वो स्टेट लीग से खेलते हुए यहाँ पे आपका आई लीग 2 तक खेल गया, जिसमें आपका एससी बेंगलुरु भी आप बोल सकते हो कि जिन्होंने एक वो किया। बट बाकी क्लब्स के लिए क्या? Dempo as well. Both हाँ, of them, डेम्पो no? एज वेल। Double promotion. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्लब्स इन स्टेट लीग? मतलब मान लीजिए कि कोई एक केरला से कोई एक क्लब है, वो स्टेट लीग खेला 2 महीने के लिए, उसमें से जो विनर है उसको तो आगे फिर पूरा साल खेलना है, आई लीग 3 में खेलेगा, फिर वहां से प्रमोशन होगा तो आई लीग 2 में खेल लेगा और पूरा सीजन वो खेलेगा। बट जो स्टेट लीग में जो क्लब्स है वो फिर क्या करते हैं? फिर तो वो यहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट कहीं पे होगा वहीं पे खेल पाए। See, the problem is in the old Indian football structure, which used to be a lot of state leagues used to happen for 1.5 months, 2 months. The longer ones, Kolkata Football League was a longer one, which was 3-4 months. 3 months max normally. Depending on the weather. And players were able to switch. From A, B, C, D. Now, since we have had now transfer windows like the rest of the world, players can't go from A, B, C, D. They can only say, at the start of the season, I signed for Club A, and then in the winter, I signed for Club B potentially. As with the youth, I think we need to look at how the whole season grows across India. That you allow teams to at least play 6, 7, 8 months. But I know, for example, in Kolkata, the clubs rather would play 3 months, spend ridiculous money, rather than saying, we spend the same money and try and work with that for 7, 8 months. So even at that level, there's a problem of too high salaries and a problem of how do you structure it? And that is, I think, the challenge. Paul Saboda, do you think under 23 league should be introduced where it needs to be mandatory, where it needs to for every as a team to send their first team? I think under 23 league तो मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है? It doesn't make sense. Indirectly RFDL is indirectly under 23 league. So we have it, and the question is, how do we give the right exposure to the players? I think that's the big challenge, right? And I know that some of the clubs don't want to play through the season because they're still concerned of trying to run the first team. I think there's certain structures, and the thing is, it's going to be very interesting to see how the whole structure grows, because this whole, for me, third division, second division, or I League 2, I League 3,
is a little weird because you're playing both of them in the same year. Again, Exactly. and that to me is something which the AFF needs to sort out next season. I know the AFF wants to have, state associations organizing. If you want to send teams into the third division, you at least have to have an 8-team proper league. So they're trying to do things, and let's see where it goes and how things are done. उसके बारे में बात की। अब थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की कि जो किस तरह से था एंड आगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगली पार्ट में हमारे कोच साहब आते हैं नेशनल टीम के। अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो जिस तरह से उनका मतलब हाई एंड लोज दोनों एक सीजन में उन्होंने देख लिया। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्या बोलते कि इंटरकॉन्टिनेंटल साफ के टाइम पे तो लोग उनको बोल रहे थे कि बस यही बंदा है जो हमें वर्ल्ड कप लेके जाएगा। एंड उसके बाद जिस तरह से सारा सिनारियो हुआ एंड उसमें काफी सारे उनके ऊपर भी यहाँ पे लोगों ने भी ब्लेम किया, सारी चीजें की। तो व्हाट्स योर असेसमेंट ऑफ इगोर स्टिमेज एंड मतलब आई थिंक 5 साल उनको दिए गए हैं बट अब अभी भी वो मतलब अगर आप कंपैरेटिवली अगर आप 2019 एंड अभी इंडियन नेशनल टीम का अगर आप रिजल्ट वाइज आप देखें तो पैरामीटर में तो आप एशियन कप चेक करोगे तो कि एशियन कप में 2019 में कैसा था, 2023 में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। दूसरा आप चेक करोगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स क्योंकि दिस आर दी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर अ नेशनल टीम। बाकी सारे तो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल साफ तो है जरूर बट उस पर्सपेक्टिव से उतने ज्यादा वो नहीं है। तो किस तरह से आप उसको रेट करते हो उसका एक साथ यानी उसके जो उसके रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सीज हुई रिगार्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग? See, I think the SAF Cup that we're discussing, the SAF Cup should not be a question. I know in the past, for India, it should be normal to win the SAF Cup, even with Kuwait and Lebanon playing in it, period. In November, I thought the World Cup qualifiers, we won away in Kuwait, big win. But then in March, we lost to Afghanistan and drew the other game. In November, we would have thought, you know what, Afghanistan, yes. But we spoke about it quite a lot. We said India's not going to win both matches from the start. That India will not win any match and just get 1 point out of the two, that's a surprise. I mean, but you have to go back September, Kings Cup, TK, you played 2-2 against Iraq. Strong game, good game, yes. But again, I still feel that Iraq didn't play properly that day. Sorry. I mean, I saw them at the Asian Cup. The Malaysia game was the first one where we got badly exposed defensively. I think that is the biggest switch which happened from July to sort of, autumn was in July. You just said, you know what, India's defense is very good, but we're not able to score goals. And then suddenly autumn came, and then suddenly, and then winter came, and we were unable to defend and we were unable to score. So that's the concern, and again, and the way he got his contract extended, the way he's tried to justify things, and that there needs to be a understanding of. I think Stimac has misused the situation within the federation because the federation is not strong. Whatever the federation says, these people, and that's a huge problem to me. I think that's the very important point, sir, कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनको लगा कि यहाँ पे हर कोई अपने पोजीशन के पीछे लड़ रहा है। मतलब सेक्रेटरी जनरल अपनी वो बचाना चाहता है, प्रेसिडेंट उनका वो कर रहा था, टेक्निकल कमिटी वो चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फायदा उठाया। अदरवाइज आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक ये टाइम तक नहीं पहुंच पाते। मेरे को भी लगता था कि इससे पहले ही सेट हो जाते। एंड देन पूरा जो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का सिचुएशन हुआ एंड उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिए गए कि भाई यहाँ पे ऐसा क्लोज रखा गया है कि नहीं रखा गया है एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे मतलब मेरे हिसाब से अगर पिछले 1 साल में बोलेंगे तो मेरे लिए सबसे अग्लीस्ट पार्ट बोलेंगे तो वही पार्ट अगर बोलेंगे तो वही है कि दैट ईगो स्टिमेज का जो पूरा सिचुएशन रहा उसके कोचिंग से लेके उसके कॉन्ट्रैक्ट से लेके उसके अराउंड जो भी सिचुएशन रहा सारा, आई थिंक वो सबसे ज्यादा अग्लीस्ट पार्ट था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आपके लिए बैड पार्ट या फिर बैड मेमोरी ऑफ दिस 1 ईयर की जहाँ पे इंडियन फुटबॉल की ये क्या ही हो गया, मतलब ये इतना ये मतलब तो बेकार सही कर दिया या फिर ऐसा ब्लंडर कर दिया या फिर आपके हिसाब से कोई ऐसा बड़ा जो चीज किया हो या फिर किसी ने भी इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट?
India losing to Afghanistan at home. I mean, I think that's very hard to measure. I mean, that is, we can talk about everything. We can, Asian Cup be TK. We were in a very strong group. You can indirectly, all of that you can accept. But to lose the way we lost to Afghanistan against a team which has players who are not even playing football anymore, in club football at the moment. So to me, that was the biggest embarrassment. And also having to realize, as bad as the players that they were on the field, if I look at the potential replacements that everyone wants to come in, we don't have replacements. For me, that is the most disturbing thing, because this team is not the best in the world is clear to me, was clear to me, is clear to me, and will be clear to me. But my question then is very simple: is these same players are better for their club sides than for the national team? Then you have to say that the coach is a problem. Right. So, and that is one thing, if we don't want to accept and don't want to change and don't want to make better, then it becomes a problem. आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही बोला कि वो अफगानिस्तान वाला जो था वो मतलब वो उस तरह से एक्सेप्ट करना भी मुश्किल था, मतलब जिस तरह से यहाँ पे उनकी कंडीशन थी। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे टॉप फॉर्म में आ रहे थे या फिर ऐसा कुछ करके आ रहे थे, एंड उसने वो ज़्यादा कर दिया। एक अगर आपका अच्छा मोमेंट आपको बताना हो पिछले 1 साल में, तो आपके लिए क्या हो सकता है? See, personally, I think the SAF final in Bangalore, I happened to be there. Great atmosphere. That was one, and if you ask me, another one would have been the ISL Cup final. That Mumbai City go to Kolkata, and I said that, and people didn't want to understand it. I said, listen, there might be 60,000 people, but if you're a good team, you will be happy you have 60,000 fans against you, because that motivates you more. And Mumbai City proved that they are, with Mohun Bagan at the moment, the best team in the country. And so those two would be the biggest highlights, I would say. केजे भाई, आप फिर से एक बार उनकी लाइनअप चेक कर लीजिए और उनके प्लेयर देख लीजिए, सारे के सारे प्लेयर नहीं थे। सो information आपको पहले अपनी but that is the problem, no? It is a problem that we have created on ourselves. Everybody else is now using players of origin. India is most probably the only country in the world which is saying, oh, you know what, no, we don't need them. आज मैंने सर उसी के रिगार्डिंग इसीलिए मैंने आज जो आर्टिकल भी लिखा है, आज सुबह वीडियो वाले वीडियो में भी मैंने ये मेंशन किया था कि आप देखिए कि टाइम काफी, मतलब जो पीओ है उसी अभी जो रिसेंटली न्यूज आया कि पाकिस्तान ने 2 प्लेयर को बुलाया है, बांग्लादेश ऑलरेडी वर्किंग ऑन हमजा चौधरी, श्रीलंका ऑलरेडी 10-15 प्लेयर, उन्होंने तो आई थिंक और भी ज्यादा नेक्स्ट जो एशियन कप क्वालिफायर्स है उसमें और भी ज्यादा वो बुलाने वाले हैं। एंड आप देखिए कि जैसे ही वो प्लेयर आए श्रीलंका ने, आप देखिए चाहे भूटान एंड पापा न्यू गिनी के सामने उनका परफॉर्मेंस रहा, बेटर रहा, नहीं तो श्रीलंका का कोई चांस नहीं बनता उनके सामने जीतने। सो उस सेंस में यहाँ पे इंडिया के लिए इट्स हाई टाइम कि हमको उस डायरेक्शन में एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द नेशनल टीम्स परफॉर्मेंस वाइज देखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट मेरे हिसाब से। अब आप देखिए कि ये जो कंट्री जिस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ रही है और भी ज्यादा वो इस तरह के ओरिजिन लिंक वाले प्लेयर को ढूंढ रहा है कि किस तरह से उनको लाया जाए। सो आपको क्या लगता है कि इन अपकमिंग ईयर्स साफ भी हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये सारे कंट्रीज यहाँ पे अपने ओसीआई प्लेयरों के साथ खेलने लगेगा, इंडिया फिर भी यहाँ पे ओसीआई प्लेयर को अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आएगा सर, तो बात हम और आप जैसे लोग बात करेंगे कि भैया फिर जो केजे भाई बोल रहे कि उनके ओसीआई प्लेयर थे, बट जो जनरल पब्लिक है इंडिया में उसका तो क्या परसेप्शन बनाएगा कि हम अफगानिस्तान के सामने हार गए, हम पाकिस्तान के सामने हार गए, हम बांग्लादेश के सामने हार गए। वो थोड़ी ना ये पूछेंगे कि भाई पीओआई थे ओसीआई प्लेयर थे। अब आप देखिए कतार लगातार 2 बार एशियन कप चैंपियन बना, किसी ने बात की कि वहां पे उन्होंने किस तरह से नेचुरलाइजेशन के प्लेयर लाए थे या किस तरह से लाए थे? फ्रांस ने तो पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया। बात कोई याद नहीं रखता ना, एट द एंड ऑफ द डे तो रिजल्ट ही याद रहता है। एंड एक बात अगर चलो मान लेते, काफी सारे लोगों का सर ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं भाई हमको हमारे होम कौन प्लेयर को यहाँ पे चांस देना चाहिए नेशनल टीम में खेलने के लिए और हमें वो सीएफयूएस की जरूरत नहीं। बट क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया में जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो स्टेट एफएस हो
या फिर एएफएफ हो या फिर क्लब्स एकेडमी सबको मिलके 10 ईयर में ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिससे 10 साल बाद जो इंडियन फुटबॉल सिस्टम से जो प्लेयर निकलेगा वो उसी क्वालिटी का हो। नहीं वो होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस है नेवर। नहीं, वो तो कोई जो 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 वो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं वो उनके पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं वो बोलने का कि यहाँ पे हमको यहाँ पे इंडियन सिस्टम के ऊपर ये बिलीफ है कि हम इस तरह का प्लेयर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर आपको ये शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए एटलीस्ट नेशनल टीम की सक्सेस के लिए तो आपको ये रास्ता अपनाना ही चाहिए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? See, I was the one in 2001 who went to the AFF and said, you know what, we need to include players of Indian origin. And I've gone and spoken to the government. My old PIO card in 2006 went to FIFA to a check. So I've been fighting for this cause for over 2 decades. And but the government, and it doesn't matter who was at power, be it the BJP or be it the Congress or be it the coalition or whatever, none of the governments have moved. And yeah, it's an Indian problem, and I fear we will have to lose badly to a Pakistan for the government to wake up. I think that's the only way that they will wake up. Exactly. And if you get, that's the sad part, but that's the reality of how India, how these days operates. And the next SAF Cup, if Bangladesh already has improved internally quite a lot in football, and then they bring in not only Hamza Chaudhry, but some of the biggest talents in world football are Bangladeshis now in Europe and in North America. We have no chance. And that is what worries me. That is a huge concern. And therefore, PIO is a topic that, one needs to talk about, but I don't know when things will change. एक सर मेरे को काफी सारे लोगों का ये भी ओपिनियन रहता है कि नहीं भाई हमारे प्लेयर फिर क्या करेंगे, मतलब ये थोड़ी ना कोई सरकारी जॉब है कि इन्हीं को देना है। जो नेशनल टीम के लिए बेटर करके दे उनके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो करना चाहिए। और कमिटमेंट तो आप किसी का वो उस तरह से जज तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो आपके पास कोई मीटर तो नहीं है कि भाई इसका क्या है। वो तो यही प्लेयर आपके अफगानिस्तान के सामने हार गई तो क्या बोलोगे? आपके प्लेयर यहाँ पे अफगानिस्तान के That's the सामने thing. But I see Sanskar saying, boycott ISL, play with I-League players. You guys need to understand one thing. The players that you are criticizing are the best in the system. And forget your young players. There are no young players who will walk in and be much, much better. That is the first reality. When you say XYZ out, put someone else in, it doesn't matter. The standard is bad, guys. Bad. Do you think if we take Gurpreet out and you put Vishal Keth or Purvala Chempa in, that it will be a massive change? No. See how many mistakes Vishal Keth did. Purvala Chempa, even in the final, what he was trying to do. That is the reality, and that is the real problem that we have, is that, for example, if you ask me who's the player of the season, I would say Rahul Beke. And that is the issue. And that is my concern, is that we have to understand the reality of where we stand, and we need to get someone in the system who understands the deficiencies, but at least who can improve the system a little bit. At the moment, our team is at this level, but we're playing at this level. If we're at this level, at least let's get up, get 2%, 5% better. That is the only thing that a coach can get. That is what Bob Houghton used to do. That is what Steven used to do. They tried to maximize the potential of their team. And Afghanistan, those two matches were the proof that this coach has not been able to improve this team. He's been there for 5 years. ये पीए बोल रहे कि भाई अरे वो भाई श्रीलंका और पाकिस्तान के तो ओसीआई और पीओए प्लेयर्स ही खेलते हैं, ये क्यों नहीं बताते? कब से भाई श्रीलंका ने अभी जस्ट ये पहला टूर्नामेंट खिलाया है अंडर पीओए प्लेयर्स। इन पाकिस्तान के भाई यहाँ पे 3-4 पहले उससे पहले वो लाए थे, उसमें से ओटिस खान और वो बीच में इंजर्ड भी हो गए थे, और टाइम लगेगा भाई। ऐसा नहीं होगा कि ओसीआई प्लेयर अगर आ जाएंगे तो But not only that, Sri Lanka has been playing actually one guy for a while, Berlin-born Wasim Razik. Wasim 2 years ago won the I-League with Gokulam. He now plays in Hong Kong. So you had even players of origin from other countries coming. Adil Nabi has played for Delhi Dynamos many years back.
एंड ओसीआई पीओए प्लेयर्स पे भाई उनमें आएंगे, वैसा नहीं होगा, क्योंकि भाई वो ऐसा तो नहीं कि पहले यूथ लेवल पे भी साथ में खेल रहे थे, यहाँ पे कहीं पे भी है, तो मतलब आप बाहर के प्लेयरों को इकट्ठा कर रहे हो तो उनका थोड़ा सा डेवलप होने में और सारा होने में यहाँ पे टाइम लगेगा। फर्स्ट मैचेस से आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सो मे बी 1 और 2 ईयर्स में वो आपको बाद में वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो ये That वाला is सिनारियो है। एंड that's the situation with Stephen Constant in Pakistan, right? Of course, they did get into the third round, sorry, in the second round of qualifiers. But even Stephen will tell you this team will take time. It's work in progress, and therefore प्रोग्रेस for me, एग्जैक्टली। it is not something which will happen overnight. But these players are of a better quality. The basics are there, and it will improve the team in a certain period of time. As Hiren said, 1 or 2 years, and the team will be better if you got PIOs. But again, we're talking if it happened today, then what happened, in 2025 or 2026, these things would happen. But at the moment, there's no clarity if anything will happen. Anyone will move on this match. आपने जो भी बात की ना, मेरे को भी सर कभी कभी मैं सोचता हूँ मतलब इंडियन फुटबॉल का, क्योंकि काफी सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि भाई कब होगा इंडियन फुटबॉल बेटर और सारी चीजें, तो मैं भी कभी सोचता हूँ, तो मेरे को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो उसी चीज पे लगता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया भी था कि हमारे जो अपकमिंग प्लेयर भी आ रहे हैं ना, वो भी मतलब मेरे को क्वालिटी वाइज मतलब ऐसा, या फिर कोई भी उसका ऐसा स्किल सेट उस लेवल पे नहीं दिखता कि जो मैंने मतलब आपके एट द मोमेंट जो आपके आईएसएल में जितने भी आपके प्लेयर खेल रहे हैं या फिर नेशनल टीम में जो भी आपके प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें और इसमें मेरे को उतना ज्यादा वो डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर नहीं देखता कि हाँ भाई ये जो टैलेंट आ रहा है ना अभी ये बैच, मान लीजिए अभी मैंने रिसेंटली भी आरएफडीएल के सेमीफाइनल फाइनल हमने देखे, तो मेरे को मतलब अब देखिए कि मैचेस पेनल्टी शूट आउट में हुए, सारी वो सारी चीजें सही है, बट क्वालिटी वाइज मेरे को प्लेयरों में और जिस तरह का गेम का मतलब टेम्पो था, अगर आप उसका कंपैरिजन में अगर आप बाकी कंट्रीज देखेंगे, मैं टॉप लेवल यूरोप की भी बात नहीं कर रहा, बट बाकी भी जो यहाँ पे कंट्रीज है उसके यूथ लेवल के मैचेस अगर आप कहीं पे उठा के देखेंगे, तो देयर इज यू कैन से कि डिफरेंस। सो सबसे बड़ा फियर फैक्टर वही है कि जो अपकमिंग टैलेंट भी है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो अभी अभी जो नया जनरेशन आएगा वो तो इससे अच्छा ही है, जो अभी एट द मोमेंट हमारी सीनियर टीम में जो भी प्लेयर है जैसा भी कर रहे हैं। I will tell you, Hiren, a good example. I saw last year the under-17s in Stuttgart. And I have seen a lot of under-17s since the first time I saw them here was in 2002. 2002 was the first time I saw an Indian under-17 team on here. And especially the under-17 World Cup squad, I saw them play a few times over the years. This under-17 squad last year was not better. Exactly what you're saying. No, that is the concern to me, is that we at grassroots and youth level need better coaches, much better coaches than what we have at the moment. Sorry to say that. And we need better structure in regard to competitions. That is the only way that you will produce better players. We're not, once in a while you'll have a better player, but mostly the players who are developing at the age of 26, 27, 28, right? So that is my concern. आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब आई थिंक मेरे को भी ये लगता है कि सबसे बड़ा जो रेडिकल डिसीजन यहाँ पे एएफएफ को अगर लेना है तो आई थिंक वही ले, एटलीस्ट यहाँ पे अगर स्टार्ट भी करना है कोई पॉइंट से कि भाई अगर हमको इंडियन फुटबॉल को, बाकी सारी चीजें तो आप कर ही रहे हो, बट आई थिंक फोकस ये जो चीज है ना यहाँ पे ग्रास रूट के कोच, और एटलीस्ट आप एक आध स्टेट में भी आपको जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वहां पे आई थिंक एटलीस्ट उनको यहाँ पे वो रिस्क लेके भी कहीं से भी पैसे का जुगाड़ कर कि कहीं पे बाकी टूर्नामेंट में आप कट डाउन करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतना पैसा तो है नहीं कि आप कोई भी चीज करोगे तो आपको उस तरह से प्राइज मिलने वाला, कहीं पे आप अब देखिए वो तो होने वाला आई लीग के आपने कुछ मैचेस दिखा दिए, उससे तो अच्छा पूरा आई लीग ही नहीं दिखाते, फर्क तो आपको कुछ नहीं पड़ने वाला उससे इसमें, तो वो पैसा No, करके भी आपको मेरे को लगता है कि एटलीस्ट but Hiren, the problem is that the AFF is financially not in a position to say, listen, I will broadcast all matches. I think fans also need to understand we're coming from a situation about 15, not even 50, pre-ISL days, that streaming not happening. Streaming didn't happen, right? So the point is that, and I would say that, if the federation is trying to cut costs, broadcast is a big point where they will be able to cut costs, right? So if people like it or not, these are realities. And if you look at the numbers of people watching even ISL, I-League, no broadcaster will come forward and say, listen, I will pay for the production. The AFF is paying for the production.
FSDL is paying for the ISL or the national team games. There are नहीं नहीं not enough people watching. That is the reality of all. The reality is that things are that the federation, if Reliance tomorrow pulls out, the federation can shut down because you suddenly have a huge hole of 50 crores which you're not getting every day. एवरीडे हाँ नहीं मेरा मेरा पॉइंट सर ये है कि इनको मतलब और इसमें सिर्फ एएफएफ का रोल नहीं रहेगा आई थिंक क्लब्स एकेडमीज को भी आई थिंक ये रिस्क लेना चाहिए कि तो उसका मतलब जो भी वो यहाँ पे अपना बजट सेट करते हैं क्लब के लिए उसमें आई थिंक वो फॉरेन कोचेस को यहाँ पे मतलब यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे उनको ऐड करना चाहिए तभी यहाँ पे कुछ आप they don't have the money for that. You do not the money. We have our biggest problem in Indian football today is I think are two things is knowledge and money. You know, those are the two things, and of course not to forget the right leadership and the will to do things. But the way things are going, if we you take this, today is the 21st of May and we do the same thing, let's say in 2 years, in 5 years, we'll do the same discussion. That is the system. Where are we progressing? People are more interested in the politics. Let me remove the old AFF, let a new AFF come in, we will change. What have they done? Do again, if you're in a leadership position, you have to do something. And the problem is that it is not only the AFF. Every other stakeholder, saying, though they are doing the mistakes, I am not doing anything. ये प्लेयर से कुछ नहीं होगा, एक दो प्लेयर से कुछ नहीं होगा. अरे एक दो प्लेयर नहीं भाई, संस्कार भाई अगर आएंगे तो भाई Sanskar, I'll put you together a whole team of PIO players tomorrow. Of 11, not 11, I'll put a squad of 20 players together. They'll beat any team in India. Once we start, there are countries who play World Cups who now totally depend on PIOs. Algeria, Morocco, mainly made of players of origin players. Indonesia is doing, So Indonesia is doing, yes. Indonesia is doing. Philippines has done that, Yeah, correct. Yes, I think Philippines ने जो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया है, I think that's look promising. I think let's see. And अभी मैं आई थिंक आज ही या कल मैंने कहीं पर पढ़ा कि उज्बेकिस्तान ने भी आफ्टर दैट यू कैन से कि ब्रिंगिंग जापानीज कोच इनटू देयर वुमेन्स नेशनल टीम, उनका भी परफॉर्मेंस, उनका जो गेम स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. तो आई थिंक आज आशा लता देवी ने ही बोला है, हाँ, जो हमारी इंडियन टीम की कैप्टन है उन्होंने ही बोला है कि लास्ट ईयर, अब जो यूजुअली पहले जब इंडिया उज्बेकिस्तान की वुमेन्स टीम के सामने खेलती थी तो वो लॉन्ग बॉल और उस तरह की मतलब ज्यादा जाते थे, बट जब से उन्होंने जापानीज कोच को लाया है उनका भी जो प्लेइंग स्टाइल एंड जो गेम का तरीका है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है. लास्ट ईयर हमको 2 बार उन्होंने हराया भी. सो कोचेस आई थिंक इज अ बेसिकल, मतलब आप फुटबॉल कोई भी अगर बंदे को किसी भी फील्ड में हमको पता है कि अगर सही से क्या बोलते हैं टीचर या फिर वो गाइड करने वाला मिल गया तो आधा काम तो आपका वहीं पे हो जाता है. फिर तो आपका आधा आपकी हार्डवर्क एंड उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई आप कितना एफर्ट डालते हो, कितना वो करते हो, एंड फिर आपका वो जो है वो होगा. तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज द one factor. And there were कृष्ण उदय, ब्रिदेश बोस, चुनी गोस्वामी, श्याम थप्पा, पीके बनर्जी, अभी भी देखिए वो तो हिस्ट्री तो भाई वही तो दिक्कत है हमारे यहाँ पे. हिस्ट्री में किसी ने बीच में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था सर रिगार्डिंग दिस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, मतलब हमने अभी रिसेंटली सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप देखी. Let's go through the names that he's mentioned. Even the Maidan film. The one topic that the film should have addressed, but it didn't, is the question of why did we in 1950 not decide to send the team to the World Cup in Brazil? World Cup. Our focus were Olympics and Asian Games, which is even today our problem. The rest of the world क्या focus कर रहा है? World Cup and Asian Cup. मेरा क्वेश्चन ही सर वही था कि आज के अगर आप टाइम पे भी देखें तो जो हमारी प्रायोरिटीज है उसमें अंडर 17, अंडर 20, 23 की जो नेशनल टीम है उसके लिए एक्सपोजर मैचेस नहीं है, बट संतोष ट्रॉफी आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी की उसके बजट में कुछ भी कट डाउन नहीं होना. जो भी आपके 10 रुपए भी आपके पास है तो आप चाहते हो कि 9 रुपए उसमें खर्च हो, बट ये जो आप इसमें 1 रुपए खर्च करोगे, बट ये नहीं करना चाहते आपकी भाई. मेरा क्वेश्चन फॉर यू, why do you think is that the case?
बिकॉज स्टेट एफएस आर क्या बोलते हैं कि इस यू कैन से कि आपको इतने टूर्नामेंट करने पैसा आएगा कहाँ से उनको, कहाँ वो भी जो भी करना है। मेरा वही क्वेश्चन था 100%. सर आपको कि आप देखिए कि आप ये अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप आपने ये करवाया है यहाँ पे, उसकी जगह पे आप सेम टूर्नामेंट जैसे अंडर 20 आप क्या बोलते हैं कि उसको क्लब के लिए करवा देते, एक ही जगह पे भले करवाते, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लब को बोला, एक ही But जगह पे this क्लब को is the इकट्ठा करके करवा देते। backward mindedness of people who don't understand or don't want to understand that football is driven by clubs around the क्लब्स world. हाँ, Around the world. why, but What are we why they doing? are not What? accepting that, why? Because we live in the 1950s, na? We live in the Maidan. As good as the movie most probably is, I've not seen it. But the topic that should have been discussed in the movie is not discussed. Is why Rahim Saab did brilliant. Okay, fine. But the moment the world in the 1950s, the world shifted their focus to the World Cup. In the World 60s, Cup, Asia shifted their focus to the Asian Cup. What are we doing? We're playing Asian Games and Olympics. In Olympics, everyone is not even sending the A teams, the B team seat, even in the 50s. Our priorities are wrong. Our priorities are wrong because my state is in all the competitions. I have to look at trying to promote the elite. The AFF at least have gone good thing. Santosh Trophy, I League, and ISL players not allowed. In the past, वो Baichung Bhutia, IM Vijayan भी खेलते थे. You know, half of the trophies Bengal has won because IM Vijayan and Baichung Bhutia used to play for the team. So that is an important thing. And Ranbir asking why FIFA allow players of origin. The world is becoming much more global, much more local. It is mixing up a lot. And if it's a problem for India, India needs to change its rule. FIFA will not keep the rules strict because of India. For me, it's easier to play for Germany or to play for India. That's a reality. So that is the problem of this world. We need to accept we are part of this global village. Football is the only global game. The rules around the globe apply to everybody. Doesn't matter if it's Brazil, if it is Germany, if it's England, if it's India, if it's China, or if it's like I don't know, Cape Verde or whatever. बट ये सर आप देखिए कि ये जो आपका जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो लगाव है रिगार्डिंग दिस स्टेट कंपटीशन, ये तो आप इतने सालों से कर रहे हो, 30 40 50 सालों से जब से कर रहे हो, तो उसमें तो आप इम्प्रूव नहीं हो, तो अब एक बार ये तो ट्राई तो करना चाहिए ना कि भाई हम एक साल ऐसा करते हैं कि जिसमें सारे जो No. कंपटीशन है। See, again, I think keep the state association competitions. Don't do away with it, but don't give it that importance that it looks like at the moment the Santosh Trophy or the under-20 championship is more important than the I-League 2, I-League 3. The women's senior national championship seems to be more important than IWL 2. You see it even, AFF का website में देख सकते हो. On these state association tournaments, every day you have a match report. But I have not seen a match report on the I-League 2, I-League 3, IWL 2. These. So your priority, again, as I say, your priorities are wrong. But it is also wrong because the state associations want to have importance. बट ये तो मतलब आप बात आप मतलब इसकी वो कर रहे, सारी चीज आप हर जगह पे आप देख रहे हो, ऐसा कहीं पे है स्ट्रक्चर क्या कि इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं? See, state association competitions happen, but they are happening somewhere or the other. Nobody cares in the rest of the world. बट नहीं, मेरा पॉइंट है कि टूर्नामेंट होते होंगे, बट आपका जो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है उसमें उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, और या फिर वो होने के लिए मतलब एक आपका लेगेसी के लिए होते रहते हैं या फिर उस तरह से। But that will not change, na? As long as there is no change in regard to the AFF, in regard to having representation from the clubs in the national body, nothing will happen, na? Be it the German association, the French association, the English association, the Brazilian, the clubs are represented. They're all the clubs are actually the drivers of the national federation. Because, so that is something that will happen. I think that is the most important point also, कि क्लब का जो से है वो यहाँ पे नहीं है सुना। आई थिंक इसीलिए चीजें भी, क्योंकि आप देखिए कि स्टेट अफेयर्स के जो लोग हैं उसका तो खुद का उसकी जेब से तो पैसा नहीं है, तो अगर
डेवलप होगा तब भी सही है, नहीं होगा तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो क्लब से छोटी एकेडमी कोई भी है यहाँ पे, वो तो अपना पैसा डाल के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सारी चीजें चला रहे हैं। तो उनको ऑब्वियसली वो यहाँ पे होगा कि जितना ज्यादा यहाँ पे फुटबॉल ग्रो करेगा तो उनके लिए वो प्रॉफिट होगा, सारी चीजें होगी। बट इन लोगों को तो यहाँ पे पता ही है कि चाहे हम कुछ करें ना करें, जो पैसा हमको जितना मिलना है वो तो मिल ही रहा है ऐसे भी वैसे भी। और जो भी उससे यहाँ पे पक्ष जो भी मिलते हैं वो तो हम वो कर ही रहे हैं। सो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अब देखिए हर जगह पे वो क्लब का यहाँ पे शेयर रहता है यहाँ पे फेडरेशन में। बट यहाँ पे वो सिनारियो नहीं है, स्टेट एफएस का ही मतलब वोटिंग ही उनके पास है, तो क्या ही करे। और ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन सर है उसमें भी आपको लगता है कि ऐसा कोई बड़ा बदलाव उससे उसके आने से होगा? मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा कि उसके आ जाने से भी कोई ऐसा कोई मतलब चेंजेस हो जाएगा। The new constitution is rather a danger that it will make things worse. If anyone says that this whole thing that happened 2 years ago around this time, around the AFF, which followed by a FIFA ban, has made things better, then to it, So that's a reality. These are realities, and we don't want to accept it. And India can वियतनाम play its भाई। own little politics in sports as happening. It's football is not an exception. All other sports, the same problems are happening. In cricket, yes, the same problems are there, but there's too much money involved. That's why cricket is successful. That's the only thing. आई थिंक क्रिकेट मतलब उस सेंस में सक्सेसफुल है। बट अभी भी आप अब देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे एरिया में ले लीजिए तो आप अब देखिए कि इस सच कोई क्रिकेट का उस तरह का मतलब स्टेडियम या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मतलब आप जो अगर आप फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से जो भी या फिर किसी भी कंट्री में कोई एक्सपोर्ट अगर डेवलप है तो जिस तरह से उनका रीच होता है। बट ठीक है, दैट्स दी अनदर डिस्कशन। वियतनाम का आप भाई पूछ रहे हो तो वियतनाम में भाई देखिए उनका जो आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने जो फोकस करके एक जो प्रोग्राम और एक जो बैच निकाला था उसने अच्छा सर्व किया। बट उसके बाद आपको सिस्टम को रन करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि एक बार कर देने से यहाँ पे आपका फिर फुटबॉल में अच्छा ही होता रहेगा। कंटिन्यूअसली आपको यहाँ हाँ Football is हाँ also up and downs, no? So therefore, हाँ Vietnam has had an up. Now they are having a down, and hopefully they'll happen up again in a certain period of time. That's the sad reality, no? सो आई थिंक हमने काफी सारे मतलब तो पहलू है टॉपिक है जिसको हमने थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश की आज। एंड इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग एक ओवरऑल हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की जिसमें यूथ फुटबॉल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, सीनियर टीम, एआईएफएफ, क्लब्स, नेशनल टीम, कोच, सबके बारे में हमने किया है। और इंडियन फुटबॉल के ओवरऑल जो मेजर मेजर आपको क्या बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। आगे भी हम डेफिनेटली हर रोज यहाँ पे लाइव करते ही है। एंड रात को 9 बजे सर के चैनल पे अरुण फुट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, टाइटल पे ही यहाँ पे उनका हैंडल है। तो वहाँ पे हम ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफी सारे लोग ट्रांसफर्स के भी कमेंट कर रहे थे। तो जो वो मसाला वाला क्या बोलते हैं डिस्कशन है वो 9 बजे के लिए रात को बचा के रखा है हमने। सो 9 बजे यहाँ पे रात को आ जाना आप सब, वहाँ पे हम ट्रांसफर्स को उन सबको डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे लिंकअप हुए हैं एंड कोई बड़ा साइनिंग हो सकता है कि नहीं किसी क्लब में, वो सारी चीजें वो डिस्कस वहाँ पे करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। एंड इसी तरह से आपका सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्यूरियस एंड अरुण फूड दोनों चैनल को। Thank you very much. Take care. Bye bye. Bye, everyone.